A very good evening to all of you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନଲେଜ ଅଫ 98 को। आज हम डिस्कशन करबा इंडियन पॉलिटी रो इंपोर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन जोड़ा कि रहइबो शेड्यूल इंपोर्टेंट अमेंडमेंट एवं बोर्ड फीचर्स ऊपर। ठीक अछि। तो क्लास को पूरा एंड जाय वाच करिवे जो माने भी नुवा अछंती सब्सक्राइब करन वीडियो को अधिक लाइक एवं शेयर कर दियंतु। तो स्टार्ट कर क्लास बिल्कुल भी देरी करबानी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन दिचे। फर्स्ट क्वेश्चन कहूची हाउ मेनी पार्ट्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करंटली हैव। ठीक अछि। करंटली भारतीय संविधान रे केतरा पार्ट अछि। केतरा पार्ट अछि ऑप्शन 22 बी 23 सी 24 ना डी 25। द राइट आंसर हो ऑप्शन ए 22 टी पार्ट अछि। ठीक अछि 22 टी पार्ट अछि। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द इमरजेंसी प्रोविजन। 22 टी पार्ट रो कोन नंबर पार्ट रे इमरजेंसी प्रोविजन विषय लिखा हिची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो। ठीक अछि ऑप्शन ए दिची पार्ट 17 पार्ट 18 सी दिची पार्ट 19 ना डी 20। ठीक अछि तो को पार्ट रे इमरजेंसी प्रोविजन विषय लिखा हिची भाई। तो ये राइट आंसर होबो पार्ट 18 ऑप्शन बी और राइट आंसर पार्ट 18 यार आर्टिकल होची आर्टिकल नंबर 352 टू 360। 352 रो 360 होची इमरजेंसी प्रोविजन विषय लिखा हिची पार्ट 18 रे। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains the union state relation। ठीक अछि केउ पार्ट रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केउ पार्ट रे यूनियन और स्टेट रिलेशन विषय रे मेंशन कराई छी पार्ट 5 पार्ट 7 पार्ट 8 ना पार्ट 11। ठीक अछि तो यूनियन एवं स्टेट रिलेशन ऊपर को पार्ट विषय लिखाई छी को पार्ट लिखाई छी। ठीक अछि तो ये राइट आंसर हो ऑप्शन डी पार्ट 11। पार्ट 11 रो अछि यूनियन स्टेट रिलेशन विषय रे। ठीक अछि या आर्टिकल रो अछि आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 263। ठीक अछि 245 टू 263 रोची यूनियन एवं स्टेट रिलेशन आर्टिकल। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9 रे को टॉपिक लिखा हिची ए जो चारटा ऑप्शन मध्ये ऑप्शन ए दिस रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स एटा तो बिल्कुल होबन एटा होची पार्ट 11। The scheduled and tribal area, the scheduled and tribal area एटा भी नो एटा होची पार्ट 9b एटा होची पार्ट 9b। ठीक अछि सॉरी एटा होची पार्ट 10 एटा बिल्कुल एटा होची पार्ट 10 एटा होची पार्ट 10 देन सी कोची ऑफ द पंचायत एटा एटा राइट आंसर पंचायत विषय लिखा हिची आर्टिकल 243 टू 243 ओ। ठीक अछि पार्ट 9 रे लिखा अछि त पंचायत विषय रे 243 टू 243 ओ। ठीक अछि। नेक्स्ट परवर्ती क्वेश्चन कोची पार्ट 16। ठीक अछि 16 नंबर पार्ट रे कोन मेंशन अछि बा कास्ट डील होची तो पार्ट 16 रो अछि ऑप्शन ए दिछि इलेक्शन बी स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस सी कोची कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 16 रे को टॉपिक विषय रे लिखा हिची। ठीक अछि the right answer of option b of right answer the special provision related to certain classes। ठीक अछि यार आर्टिकल रहउची आर्टिकल 332 342। ठीक अछि आर्टिकल 332 342 सेमति इलेक्शन ता को पार्ट रहउची इलेक्शन आउची 15 पार्ट रे इलेक्शन आउची 15 पार्ट रे। ठीक अछि यार आर्टिकल होची 324 टू 329 ए 324 टू 329 ए। ठीक अछि सेमति कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एटा होची हमर पार्ट 20। ठीक अछि एटा होची पार्ट 20 आर्टिकल 368 सेमति द शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया एटा होची हमर पार्ट 11 सॉरी पार्ट 10 रे। ठीक अछि एटा होची पार्ट 10 रे एवं यार आर्टिकल रहउची 244 टू 244 ए। ठीक अछि 244 टू 244 ए रहउची यार पार्ट यार आर्टिकल। ठीक अछि
Next question. According to the Indian Constitution, which of the following is incorrect pair? ठीक ଅଛି कोटा हमर भूल pair अछि हम फाइनल करिवार अछि पार्ट 2 सिटीजनशिप एटा बिल्कुल ठीक अछि पार्ट 2 हम सिटीजनशिप पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस एटा मते संपूर्ण ठीक अछि पार्ट 4 रा डीपीएसपी पार्ट 4 ए पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज एटा भी ठीक अछि पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज विषय लिखा हिची ठीक अछि देन पार्ट 9 रो अछि द यूनियन टेरिटरी पार्ट 9 रो अछि द यूनियन टेरिटरी एटा संपूर्ण भूल अछि यूनियन टेरिटरी अछि हमर पार्ट 8 रे पार्ट 8 रो अछि यूनियन टेरिटरी पार्ट 9 रे कोन अछि 9 रो अछि पंचायत ठीक अछि पार्ट 9 रो अछि पंचायत फाइन 9 रे पंचायत अछि ଏବଂ 9 ए रे अछि म्युनिसिपालिटी 9 ए रे अछि म्युनिसिपालिटी municipalities ठीक अछि next next question in which part and chapter of the constitution was the right to property inserted after being removed from part 3 ठीक अछि तो आगुरो जो part 3 रे थिला right to property सेटा part 3 रो रिमूव कराय कि constitution रो को पार्ट बा एवं को चैप्टर रे से इंक्लूड करा दैछि ऑप्शन ए दिछि पार्ट 11 चैप्टर 3 बी पार्ट 12 चैप्टर 4 सी पार्ट 14 चैप्टर 1 and D part 16 chapter 2 तो को चैप्टर लिखा हिची बा इंसर्ट करा हिची राइट टू प्रॉपर्टी को आंसर हबो ऑप्शन बी पार्ट 12 चैप्टर 4 रे आको इंसर्ट करा हिची सॉरी हां इंसर्ट करा हिची ठीक अछि पार्ट 3 थिला फंडामेंटल राइट अंडर थिला राइट टू प्रॉपर्टी देन राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करा जाय कि ठीक अछि राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करा जाय कि ताको इंसर्ट करा गला पार्ट 12 चैप्टर 4 रे पार्ट 12 चैप्टर 4 ताको इंसर्ट करा गला ठीक अछि फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा what are all the nine articles covered under part 17 part 17 of the constitution part 17 रे under केतरा को nine not article आछि ऑप्शन ए 343 to 351 ऑप्शन बी 334 to 342 ऑप्शन सी 332 to 340 ऑप्शन डी 330 to 342 तो पार्ट 17 अंडर रे को नोटा आर्टिकल आछि राइट आंसर ऑप्शन ए 343 टू 351 ठीक अछि এবং পার্ট 17 হচ্ছে আমরা অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ পার্ট 17 হচ্ছে অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ে সেটা মেনশন ଅଛି ফাইন এই ଯିବା নেক্সট क्वेश्चन পার্ট 15 को जिनसे तो से डील କରୁଛି ବା ସେଥିରେ କୋ ଟપિକ मेंशन ଅଛି ऑप्शन ए ऑफिशियल लैंग्वेज एटा बिल्कुल होबनी एबी जस्ट हम देखि आसले एटा होची पार्ट 70 एटा होची पार्ट 70 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा होची पार्ट 20 ठीक अछि इमरजेंसी प्रोविजन होची हमरो पार्ट 18 बाकला इलेक्शन हमरो डील କରୁଛି पार्ट 15 सहित ठीक अछि पार्ट 15 सहित इलेक्शन डील କରୁଛି यार आर्टिकल होची 324 टू 329 ए 324 टू 329 ए होची इलेक्शन रो आर्टिकल जोटा कि पार्ट 15 रा आछी ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ दिस पार्ट 17 कहा सहित सेरा डील करछ बस तार अंडर को टॉपिक आछी ऑप्शन ए स्पेशल प्रोविजन फॉर एससी एंड एसटी एटा होबनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एससी एंड एसटी एटा बिल्कुल भी होबो नै ठीक अछि then option b आसीबो इलेक्शन कमिशन तो आसुनी इलेक्शन हमर आसुची पार्ट 15 रे आसुची इलेक्शन ठीक अछि इमरजेंसी प्रोविजन आसुची पार्ट 18 रे इमरजेंसी प्रोविजन आसुची पार्ट 18 रे बकला ऑफिशियल लैंग्वेज एटा हमर आसुची पार्ट 17 रे ठीक अछि ऑफिशियल लैंग्वेज आसुची पार्ट 17 रे ठीक अछि फाइन बुझा बोलला पार्ट 17 रे आसुची ऑफिशियल लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन
how many scheduled are there in the Indian constitution? In the constitution केतला scheduled अछि? How many scheduled are there in the Indian constitution? ठीक अछि तो जदि हम देखिबा तार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे टोटल हमरो 12 टी शेड्यूल अछि टोटल हमरो 12 टी शेड्यूल अछि ठीक अछि then which of the following state is included in the sixth schedule of the Indian Constitution of India ठीक अछि sixth schedule 6 नंबर शेड्यूल रे को कहा विषय रे इंक्लूड करा जायछि ठीक अछि which of the following states is included in the sixth schedule of the Indian Constitution फर्स्ट हम देखो sixth schedule रे कोन मेंशन अछि 6 नंबर शेड्यूल रे मेंशन कोन अछि सेटा अछि special provision relating to the administration of tribal areas in the states of Assam then Meghalaya then Tripura then Manipur sorry Mizoram ठीक अछि तो 6 नंबर शेड्यूल रे मेंशन अछि कि आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम ए चारोटी स्टेट ठीक अछि ट्राइबल एरिया जति कि भी अछंती समानकर एडमिनिस्ट्रेशन विषय लिखा हैछि ठीक अछि तो क्वेश्चन पचाउछि 6th शेड्यूल रे को स्टेट इंक्लूड करा जायछि ए जो चारोटी ऑप्शन मत तो नागालैंड नाही मणिपुर नाही मिजोरम अछि ठीक अछि मिजोरम तो मिजोरम सेही 13 स्टेट मध्य गोटे जोठी कि हमर कोन अछि ना 6 शेड्यूल तक इंक्लूड कर जायछि ठीक अछि टोटल 4टा स्टेट आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ठीक अछि AMTM फाइन बुझा पड़ला नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following subjects is covered in the 11th schedule of the constitution of India ठीक अछि 11th schedule रे एही चारोटी ऑप्शन मध्य कोटा को इंक्लूड करा जायछि फर्स्ट ऑफ ऑल 11th शेड्यूल हमर अछि का विषय रे ना पंचायती राज विषय ठीक अछि 11th शेड्यूल अछि हमर पंचायती राज विषय पंचायती राज विषय अछि 11th शेड्यूल ठीक अछि तो चारोटी ऑप्शन मध्य को टॉपिक ता 11th शेड्यूल रे मेंशन नै कि अछि ऑप्शन ए देछि मेजर फर्स्ट सॉरी फॉरेस्ट प्रोड्यूस बी हेल्थ एंड सैनिटेशन सी देछि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एवं डी पॉल्यूशन पब्लिक ऑर्डर ठीक अछि तो कोटा इंक्लूड करा देछि चारोटी ऑप्शन मध्य पंचायत राज सिस्टम विषय रे तो ए राइट आंसर हबो ये राइट आंसर हबो ऑप्शन बी हबो राइट आंसर हेल्थ एंड सैनिटेशन ठीक अछि हेल्थ एंड सैनिटेशन ठीक अछि एबे 11th शेड्यूल हमर आगु नथिला 11th शेड्यूल को परे ऐड करा गला ठीक अछि केबे ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर रे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर रे आगु ऐड करा गला 11th शेड्यूल ठीक अछि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 1992 मसरे कोन करा गला ना पंचायत राज को इंक्लूड करा गला एज 11th शेड्यूल हिसाब ठीक अछि बुझा पड़ला नेक्स्ट क्वेश्चन जो next question which of the following schedules of the constitution of India has been incorrectly matched with its content ठीक अछि ए जो ऑप्शन मध्यरु कोटा हमर इनकरेक्ट अछि को पेयर हमर इनकरेक्ट अछि तो फर्स्ट देछि ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज बी सेकंड शेड्यूल लैंग्वेज सी थर्ड शेड्यूल रे forms and oath affirmations fourth schedule रे allocation of seats in the council of state allocation of seat in the council of state तो कोटा हमरो भूल अछि को ऑप्शन दा भूल अछि ठीक अछि तो ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एटा बिल्कुल ठीक अछि फर्स्ट शेड्यूल रे स्टेट एवं यूटी विषय लिखा अछि सेकंड शेड्यूल एटा भूल अछि कारण लैंग्वेज होछि हमरो केत नंबर शेड्यूल 8 नंबर शेड्यूल लैंग्वेज होछि 8 नंबर शेड्यूल सेकंड शेड्यूल रे कोन अछि ना सेकंड शेड्यूल रे अछि हमरो सैलरी एंड अलाउंस ठीक अछि सैलरी एंड अलाउंस विषय लिखा अछि
ठीक है जते भी हमर वीवीआईपी मान अछंती माने गवर्नमेंट ऑफिशियल माने बड़ बड़ पोस्ट से मान सैलरी विषय लिखा है सेकंड शेड्यूल रे लैंग्वेज अछि हमर 8 नंबर शेड्यूल ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द नाइन्थ शेड्यूल वाज एडेड to the constitution of India by the which amendment act ninth schedule हमर को amendment act रो अंडर रे ऐड करा गला ऑप्शन ए 14th amendment act बी फर्स्ट amendment act सी 93rd amendment act ना डी 10th amendment act ठीक अछि तो यार राइट आंसर कौन हो नाइन्थ शेड्यूल ठीक अछि नाइन्थ शेड्यूल कौन अछि नाइन्थ शेड्यूल कौन मेंशन है अछि एट होछि जमींदारी सिस्टम ठीक अछि एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम ठीक अछि तो नाइन्थ शेड्यूल को मन रखिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 रे ऐड करा गला ऑप्शन बी और करेक्ट आंसर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 अंडर रे नाइन्थ शेड्यूल को ऐड करा गला गोटे शेड्यूल हिसाब ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द व्हिच अमेंडमेंट एक्ट fundamental duties of citizens were added to the constitution of India by the which amendment act ठीक अछि फंडामेंटल ड्यूटी को amendment act रे ठीक अछि constitution रे ऐड करा गला फंडामेंटल ड्यूटी को तो फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा गला हमरो ऑप्शन सी 42nd amendment act 1976 रे अंडर ताको ऐड करा गला एवं 46 amendment act को हम कहितो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहितो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली हम कहितो का 42nd amendment act को काहे ना 42nd amendment act कोन हल टीपीएसपी को ऐड करा जायतिला ठीक अछि ठीक अछि देन लोकसभा जो टर्म थिला सेटा 5 टू 6 को इंक्रीज करा जायतिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे एवं एठरे मेनली तीनटा वर्ड ठीक अछि 42nd अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे मेनली तीनटा वर्ड को प्रीएम्बल रे ऐड करा जायतिला एथबा मोस्ट इंपोर्टेंट को वर्ड को गोटे होची सोशलिस्ट सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ठीक अछि ए जो तीनटा वर्ड को प्रीएम्बल रे ऐड करा जायतिला दैट्स व्हाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम कहितो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स reduced to the voting age from 21 to 18 voting age को 21 रो 18 को reduce करिबा ता को अमेंडमेंट रे आस्थिला ठीक अछि को अमेंडमेंट आस्थिला ऑप्शन ए 55 अमेंडमेंट 58th amendment 61 amendment ना 66th amendment तो राइट आंसर ऑप्शन सी ऑफ राइट आंसर 61 amendment act 1989 रो अंडर रे वोटिंग एज को 21 रो कमा जाय कि 18 को करा दैथिला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा under which of the following amendments to the constitution of India is defection to another party after election made illegal ठीक अछि क्यों amendment अंडर रे India is constitution of India is defection to another party after election made illegal ठीक अछि एटा को अमेंडमेंट अंडर रे हितला एटा को अमेंडमेंट अंडर रे हेइथिला ठीक अछि द आंसर हबो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 जाको हमें एंटी डिफेक्शन लॉ बोली हम कहितो एंटी डिफेक्शन लॉ ठीक अछि हमर केबे आस्थिला ना 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच अमेंडमेंट मेड it mandatory for the president to give his assent to the constitutional amendment bill को अमेंडमेंट अंडर रे प्रेसिडेंट बाध्य अटंती तांकर एसेंट देबा पई टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल
Here answer कौन होगा 24th Amendment Act 1971 ए amendment रे कौन आसला कि some cases रे कौन करा जाए ना president mandatory president बाध्य अटंती कि से constitutional amendment bill को assent देबा ପାଇଁ ବା तांकर सहमति देबा ପାଇଁ ठीक अछि next in the year 1978 the Desh amendment eliminated the right to property as a fundamental right right to property को year बा amendment under ताको eliminate कर देइथिला right to property को remove कोटी कर माने amendment under कर देइथिला तो ये right answer हो 44th option C 44th amendment act 1978 under रे right to property को fundamental right to remove करा जाय कि ताको ऐड कर देइथिला part 12 chapter 4 ठीक अछि part 12 chapter 4 ताको include करा देइथिला ठीक अछि next question under which constitutional amendment act the preamble of the constitution was amended ठीक अछि को constitutional amendment act रो अंडर रे preamble को amend करा देइथिला preamble को amend करा देइथिला राइट आंसर कोन हो ऑप्शन डी ऑफ राइट आंसर 42nd amendment act रो अंडर ताको चेंज करा देइथिला जोरा कि हिस्ट्री के पूरा पॉलिटी रो हिस्ट्री रे केवल थरे ही preamble को amend करा देइछि सेरा होछि 42nd amendment act 1976 अंडर ठीक अछि केवल कोन कोन हेतला ना तीनटा वर्ड केवल तीनटा वर्ड गोटु छ सोशलिस्ट देन आसीबा हमरो सेक्युलर एवं इंटीग्रिटी ए तीनटा वर्ड को ही हमरो ऐड करा देतला प्रीएम्बल ठीक अछि से होछ 42nd amendment act 1976 जाको हम कहितो से जो amendment को हम कहितो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोले हम कहितो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोले हम कहितो ठीक अछि next which of the following is the source of the federal system with a strong central government provided in the Indian constitution ठीक अछि तो हमर जो फेडरल सिस्टम सेटा में को कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोरो करिछु ठीक अछि फेडरल सिस्टम को हमें को कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बोरो करिछु आंसर अब ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा हम एटा को बोरो करिछु कनाडा ठीक अछि आपको बोरो कराई छी कनाडा कोन ना फेडरल सिस्टम ठीक अछि फेडरल सिस्टम को बोरो कराई छी कनाडा फाइन next question procedure for the amendment of the constitution is taken from procedure of the amendment ठीक अछि amendment procedure of the amendment माने केमिता में amend करिबा constitution को ताको कोठु बोरो कराई छी ऑप्शन ए देछि यूएसए बी रशिया सी साउथ अफ्रीका ना डी कनाडा राइट आंसर ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका रे एटा बोरो कराई छी ठीक अछि प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट फाइन देन from which country the concept of fundamental duty in India constitution is taken ठीक अछि fundamental duty रो concept को हमें को कंट्री रो बोरो करिछु fundamental duty को हमें बोरो करिछु को कंट्री रो आंसर अब ऑप्शन बी रशिया ऑप्शन बी रशिया ठीक अछि फंडामेंटल ड्यूटी आसे हमर रशिया रो फंडामेंटल राइट आसे हमर यूएसए अमेरिका ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इमरजेंसी प्रोविजन को कंट्री रो बोरो कराई छी इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया बी जापान सी कनाडा ना डी जर्मनी तो राइट आंसर अब ऑप्शन डी जर्मनी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the law making procedure in the Indian constitution has been inconsiderably influenced by the constitution of Desh ठीक अछि law making procedure को कंट्री रो इन्फ्लुएंस हेके सेटा होना हिची law of procedure ऑप्शन ए देछि ऑस्ट्रेलिया बी जापान सी नॉर्थ कोरिया ना डी यूके तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी जापान ऑप्शन बी जापान रो एटा हमर होना हिची procedure established by the law next
The provision of Office of Vice President in the Indian Constitution is taken from which country? Office of Vice President. Vice President topic or Office of Vice President କୋଉ country ରୁ borrow କରାଯାଇଛି? କୋଉ country ରୁ borrow କରାଯାଇଛି Office of Vice President ବା Post of Vice President? Answer of option C USA. USA ସେଟା borrow କରାଯାଇଛି. USA ରୁ କଣ ଆସିଛି ଆମର fundamental right ଆସିଛି, then independence of judiciary, ठीक अछि, independence of judiciary, then judicial review, ठीक अछि, then most important impeachment of president, president को केमिति impeachment करा जाए तार मध्ये प्रोसेस अनाइछि कोड ना यूएसए, ठीक अछि, then आउट मध्ये अनाइछि removal of Supreme Court and High Court judge. Supreme Court एवं High Court judge केमिति रिमूव करा जिवो से तार मध्ये प्रोविजन बा तार मध्ये प्रोसेस अनाइछि यूएसए, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, the idea of directive principle of state policy DPSP रो आइडिया को कंट्री रो बोरो कराइछि? the idea of DPSP, ठीक अछि, DPSP हमर आछि आयरलैंड कंट्री रो, ठीक अछि, तो आयरलैंड रो आछि फर्स्ट ऑफ ऑल DPSP आछि, देन आछि प्रेसिडेंट को इलेक्शन मेथड, ठीक अछि, प्रेसिडेंट को इलेक्शन मेथड भी आछि आयरलैंड कंट्री रो, ठीक अछि, देन आगोटे कोन आछि, आगोटे आछि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर माने केमिति नॉमिनेटेड हेबे तार मध्ये प्रोसेस आछि आयरलैंड कंट्री रो, ठीक अछि। लास्ट क्वेश्चन देखिबा, इंडिया हैज बोरोड द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देश। फंडामेंटल राइट को कंट्री रो हमरो बोरो कराइ छै? फंडामेंटल राइट हमरो बोरो होई छै, जस्ट हम डिस्कशन करले यूएसए रो, ऑप्शन बी हबो राइट आंसर, ठीक अछि, ऑप्शन बी हबो राइट आंसर। The idea of concurrent list रो आइडिया टा को कंट्री रो बोरो कराइ छै? The idea of concurrent list is borrowed from which country? ऑप्शन ए दिछि यूएसए, बी स्विट्जरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया ना डी यूएसएसआर, ठीक अछि, तो आंसर ऑफ ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया रो बोरो कराइ छै फर्स्ट ऑफ ऑल concurrent list, ठीक अछि, तापर आसीबो आगोट मते आछि ऑस्ट्रेलिया जोटा कि इंपोर्टेंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस इन पार्लियामेंट, ठीक अछि, दीटा जो हाउस अछि लोकसभा एंड राज्यसभा तार जॉइंट सेशन बसिवार टॉपिक मते आछि ऑस्ट्रेलिया कंट्री रो, ठीक अछि, कंकरेंट लिस्ट ता सहित जॉइंट सेशन हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक अछि, ताकर जो एका संगे बसबो जॉइंट सेशन बा जॉइंट सिटिंग तार प्रोसेस एवं कंकरेंट लिस्ट टॉपिक मते आछि ऑस्ट्रेलिया कंट्री रो, ठीक अछि। तो ये थिला आज रो 30 टी एमसीक्यू जोडे का हमर बेस दिला इंडियन पॉलिटी ऊपर, ठीक अछि। आशा को समस्त वीडियो भल लागत, वीडियो भल लागत वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर कर दन, ठीक अछि। पुनः मिसवा नेक्स्ट क्लास और धमाकेदार वीडियो को नै कि नेक्स्ट आसीबी मो हिस्ट्री को नै कि हिस्ट्री केते एमसीक्यू को नै कि, ठीक अछि, एमते हमें एमसीक्यू डिस्कशन करबा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी रो। तो जदि वीडियो भल अछि वीडियो को लाइक करंतु एवं केमते लागला वीडियोटी हमको कमेंट बॉक्स में निश्चित जणाइबे, ठीक अछि। तो पुनः मिसवा नेक्स्ट क्लास और धमाकेदार वीडियो को नै कि से पर जय जगन्नाथ, धन्यवाद।